मैं कौंसल जनरल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मेरे ऑनर में और APNS के ऑनर में यहाँ दावत दी है, और मेरे ख्याल में जितना अच्छा चीनी कुजीन हमने यहाँ खाई है आज तक कहीं नहीं खाई. I'd like to thank the Consul General for his hospitality, for inviting us over to the Chinese Consulate and hosting us tonight. The food that we had tonight, the 7-course meal, I don't think I've ever had such great Chinese food anywhere in the world. And my compliments to the chef, and I'm extremely grateful to the Consul General once again. Can you tell us about the bilateral relation, because CPEC is second phase started? उर्दू में कह देंगे आप. पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो रिश्ता है वो तकरीबन 70 साल से ज़ायद पुराना रिश्ता है. हमें एक किस्म के आहनी भाई जब हम जाते हैं तो चीन में हमें कहा जाता है कि हम आयरन ब्रदर्स हैं, हम एक दूसरे के आहनी भाई हैं. जो रिश्ता इतना मजबूत है कि लोहे की तरह वो मजबूत है और उसको कोई उसके अंदर दरार नहीं डल सकती. जो CPEC लॉन्च किया गया था वो सदर आसिफ अली जरदारी का विजन था, जिसके ऊपर उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और उसको फिर बाद में अगली हुकूमत जो आई नवाज शरीफ साहब के की उसने भी उसको बहुत इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया. और अब हम सेकंड फेज़ में दाखिल हो रहे हैं. साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब जब चीन गए उन्होंने इसके ऊपर ज़ोर दिया कि पाकिस्तान चीन की जो दोस्ती और ताल्लुकात हैं वो कितने अहम हैं, और CPEC पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में क्या किरदार अदा कर रहा है और कितना अहम है. मुझे उम्मीद है कि जब सेकंड फेज़ शुरू हो रहा है वो भी पाकिस्तान की तरक्की में उतना ही मददगार साबित होगा जितना पहला फेज़ हुआ था, बल्कि शायद उससे ज़्यादा मददगार साबित हो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत है अपने आहनी दोस्त की. शुक्रिया. Tonight is my good pleasure to host Senator and his colleague to our Consul General, and we have a very good talking, and we share many views on bilateral issues, and also we have a Chinese dinner here, and I'm so glad that and the Senator and his friend, colleague, and our friends love Chinese food so much, and the food is a very important part of Chinese culture, and from the dinner, and we share a lot of the cultures, and also we learn from each other. And I'm glad to learn that APNS have a very close cooperation with Chinese media, and in the following period of time, and we hope that APNS can renew its cooperation agreement with Chinese media associations. And we also hope that the CIP and the APNS can visit China and have more direct communication with the Chinese people, and to make more report on China, on Pakistan-China relations. And we do hope that APNS will play a more important role in this. I hope that and the Senator and will lead a delegation to China in the coming period of time. And also talk about the CPEC and with common with corporations from China, Pakistan. We have made a lot of achievements in the first phase, and many areas, including the energy, connectivity, industrial, and some other areas. And now we are into the second phase of construction of CPEC, and we will focus more on the specific cooperation in agriculture, in the industry, in technology, and mining, and the people-to-people exchanges. And we hope that the cooperation of CPEC construction will bring more concrete benefit to the people for both countries. And on this process, I also hope that the media, especially Pakistan media, will play more important roles to report the cooperations and the stories in the CPEC constructions. And we are looking forward to that with the hard work of the two countries, and the CPEC will yield more concrete results.